हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं शाहान बाबर और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद शाहान। आज के हमारे इस सेशन में जैसे कि आप जानते हैं कि दो बहुत ही सीनियर गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा काजी उस्मान रियाज साहब को। काजी उस्मान साहब इज वर्किंग in Samad Group as GM Strategic HR and OD. Thank you very much, Usman sir, for joining us. बहुत शुक्रिया आपका। My And pleasure, Shahan. on the other hand, इनके साथ हमें ज्वाइन किया है मिस कमल मलिक ने। मिस कमल is working in I2C and she is working as senior manager HR and talent acquisition. Thank you very much, Miss Kamal, for joining us. My pleasure, Shahan. Thank you very much for bringing us on board. थैंक यू। वेल, जैसे कि हमारा टॉपिक है एम्प्लॉइज रिटेंशन, आज उस पर हम बात करने वाले हैं और मैं उस्मान साहब से बात शुरू करना चाहूँगा। उस्मान साहब सर, लोग एम्प्लॉइज जो हैं, जो जॉब करने वाले हम जैसे एम्प्लॉइज हैं, व्हाई दे स्विच द जॉब्स, व्हाट मेक्स देम स्विचिंग? बेसिकली अगर जॉब स्विचिंग को अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखते हैं तो इसकी वन ऑफ दी मतलब टॉप 2 रीजंस हैं। कुछ मार्केट में पुल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट में अगर बूम है और जो है बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द प्रोफेशनल्स, वो डेफिनेटली एक वहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने के बाद दैट्स व्हाट वी कॉल अ पुल फैक्टर। और उसमें ये होता है कि जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करते हैं। आफ्टर अ कंप्लीट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस वो एक जॉब मार्केट एक ओपन हो जाती है। जो सेकंड फैक्टर जो है जिसको हम कह सकते हैं, जो कि एक रीजन बनता है एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाने का, दैट इज अ पुश फैक्टर। और पुश फैक्टर जो है दैट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस। नंबर 1 कुड बी द टॉक्सिक कल्चर। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है ऑफिस पॉलिटिक्स हैं, प्रॉपर रोल्स डिफाइन नहीं है, कॉम्पेन प्रॉपरली डिजाइन नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जो कि इंटरनल विद इन द डोमेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो प्रॉपरली मैनेज और एड्रेस नहीं किया जाएगा तो दैट विल बी डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग रीजन फॉर एम्प्लॉय टर्नओवर। ये दो मेजर बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो इन दो हिस्सों में ये डिवाइड हो सकता है। सही। अगर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर की स्पेसिफिकली, तो कमल, हाउ डू यू सी दिस पुश फैक्टर? डू यू ज्यादा डोमिनेंट क्या है इसमें? पुल फैक्टर, मार्केट की, इंडस्ट्री की नीड ज्यादा बढ़ गई है, या जो जैसे उस्मान साहब ने कहा कि पुश फैक्टर जिसमें जो इंटरनली कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं? I think Shahan, Usman sir was right to some extent, and I would like to add on into that कि जिस sector में हम operate कर रहे हैं ना, that sector is very critical in terms of the fact that you wake up in the morning and you got to know that suddenly a technological stack has changed, right? And if the organization is not been able to pull up that pace with the change of technology and innovation, that disturb our youngsters, because they are so passionate to learn different stacks of technology, who really have the interest and passion to move on towards those expertise. Of course, that would be one of the major reasons why people in IT sector switch most of the time, because they want to learn new things. They want to explore different platforms. They want, if I talk about specifically, they want to learn about different cloud-based technologies where data can be stored without having the big data can be stored on different platforms at single click. So that could be the one reason. And secondly, I think I would say here that the experience which an organization provide from the start of the journey of any person, of any prospect, of any employee, that makes a lot of difference to retain that person for the longer period of time. And specifically, if I talk about that, for example, if you have, from the talent acquisition perspective, if you have a very long process of getting people on board, that will definitely people get into the organization for sure because they need a job for sure. But then you can't retain them because they feel that,
okay, for example, if there is a need of any department, let's talk about data analysts. So if an Right. organization requires 10 data analysts and currently you have 3 at the moment, and the workload is increasing, and they got to know into the process that it takes a very long time to bring other team members on board. And that's become the frustration point of those people who are already been into the process, and taking the pressure of 2 people together, and working day and night, and meeting both the ends. So I think that could, if I talk about it, as it could be the another reason that if your recruiting process is very thick and very lengthy, Right. and it's not Right. lean, that could cause that level of frustration and disappointment in the employees to think about the other organizations where they have more resources and they're more sharing of the work at the same time. Third, I would say, which I experienced in my professional career, is that the need of development of the people within the organization is very important and plays a very key role nowadays. Because if I talk about specifically I2C, we do have very strict audits. We have to meet certain requirements of audits. I mean, recently they were talking about to introduce in our organization succession plan, SDP plans, but we were, our priority was different, and we were trying to focus on other priority things and put that thing And these are the internal audits or external? both internal and Okay. external as well. So we have a very extensive program for this. So we came to a point. The bottleneck came at that point where we have left no choice to introduce succession planning in the organization, and we started up working now. So I think the people who joins in, they stay with the organization for 1 year, 2 years, and they look up them. They look up to the leadership. They look up to the people who are there to be their mentors, to be their coaches. So I think that would be a very important factor when they don't see their development plan in terms of practicality and the proper tracking system and progression into the role. That makes another reason. Sorry, I'm taking a little long. I Okay, think, please go ahead. Go ahead. That's and I perfectly think fine. I'm talking about from the perspective of talent acquisition expert, and as well as the employee relational side as well. So that to some extent would be my pain areas as well. I think if the organization don't meet up the commitment of an employee when he or she joins in, from that point that triggers to an employee, and he started looking from the day one. To some extent that things get mature after a certain time, of course, because they want to have a good impression on their profiles, that they're on the resumes as well, that they're stayed for certain good organization for a certain period of time. But to be honest with you, they start looking and hunting for better opportunity at the same time, parallelly. So if you I think it comes the huge responsibility at the time on the shoulders of the organization as well, that whatever commitment, small or big, is you're getting brief to the people on the day of their joining, you should keep your words, and then Right. that could be another reason of their frustration, which could lead the people to switch the job. Another thing which is very important nowadays, which organizations are missing, I think, the variable compensation structure, which Usman Saab had just talked about. I think everybody is offering fixed salaries, we are getting in our pockets. But nobody is thinking about this young generation who are coming to the top tier universities or top tier two universities. They have already make up their plans to, they are very passionate in terms of not just their career development, but of course their, earning good amounts from the organizations as well. Yeah. So if they find that the work is becoming laborious for them, and they every single day they are coming and doing the same job and getting the same salary, and nothing is challenging them in terms of money, in terms of pushing themselves to move on to the next level, that could be another aspect where they are looking for another opportunity where they are having multiple compensation structure for them in terms of performance pay, in terms of bonuses, in terms of variable pay, and in terms of revenue share at the same time. Because now people think that if organization is earning
big numbers, where is our share? Because we contributed equally in the success of the organization. So these are the very major factors. There are multiple other factors which we can talk about, and talk for a longer period of time. But this, in my opinion, as far as my experience is concerned, I think this was the reason. And the most important, one more factor which I felt is people are looking now is flexibility of working. अभी हम उस्मान साहब से जो बात कर रहे थे कि जिस सेक्टर में ये ऑपरेट करते हैं, I mean they are always on his toes. I'm sure about it. Obviously. Always on his toes. So I think that's again a very important factor for people to switching now, because the work-life balance across the globe is being disturbed now, and people are looking for their comfort. They are looking for their ease. They're looking for their to take care of their families as well at the same time. So if somebody is staying at the office for 12 hours, 14 hours, how would he come back home and give time to their children and give time to their spouses as well? So and then get back to office with a fresh mood. And then the organization expect the results as well. So I think I took a long. I'm sorry, but I'm just giving out. I'm venting out. I'm venting out as well. So I think these are the things which organizations really have to think about from the employee perspective. That we talk about numbers, we talk about retention indexes, we talk about turnover ratios, we talk about so many things, but we don't talk about their work-life balance. We don't talk about their flexibility. We don't talk about their taking care of their families to the next level. We don't talk about creating that memorable their experience. Compensation. Their development. Their development. We don't talk about their memorable experience with the organization to make their journey smooth and that transition smooth. So I think that's, in my opinion, would be the major opportunity. Right. Very well taken. मिस कमल ने एक बात कही उस्मान साहब के डेवलपमेंट ऑफ पीपल कि जब वो आते हैं फ्रॉम द डे वन दे ऑब्जर्व कि यहाँ पे मेरे पास मुझे क्या क्या मेरी डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो रही है, किस तरह हो रही है, मुझे क्या नया सीखने को मिल रहा है, राइट? तो ये चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, अब वहां पे तो ऑब्वियसली मशीन्स काम कर रही हैं, वही प्लान्स हैं, वही मशीन, वही टारगेट हैं, वही चीजें, तो यहाँ पे तो कुछ नया नहीं होता है. हाउ डू यू गाइस रिटेन योर एम्प्लॉइज? जी थैंक यू सो मच शहान. द थिंग इज जो प्रोडक्शन सेटअप जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें प्रोडक्शन में अब कंपटीशन इस कदर बढ़ चुका हुआ है कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑन विच कंपनीज आर इन्वेस्टिंग. There are number of initiatives जो that has been taken in the recent past कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्शन को improve कर सकते हैं. When we talk about the lean manufacturing, especially in the manufacturing setup, and then Kaizen. So there are a lot of learning possibilities and learning opportunities for the professionals जो कि जिसको सीख के नई चीजें वहाँ पे उसको implement करना, that is a challenge as well. उस पे भी जो कमल ने एक बात की थी, उस पे मैं कुछ जो है फैक्ट्स कोट करना चाहूंगा. आई टोटली एग्री विद हर कि जो हमारा टैलेंट एक्विजिशन का जो एलिमेंट है, दैट इज वेरी क्रिटिकल. एंड देयर वाज अ वन सर्वे बाय ओसी टेनर, अकॉर्डिंग टू देम 69% ऑफ एम्प्लॉइज who undergo effective onboarding they are more likely to stay with the employers for the next 3 years. हमारा यहाँ पे सेटअप गैप्स इतने ज्यादा हैं, और वो प्रोसेस एक होता है कि एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद देन देयर इज अ ह्यूज गैप, दैट वाज अ कंप्लीटली साइलेंस जोन, और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद 3 हफ्ते के बाद हमें याद आता है कि फिर हम दोबारा टच करते हैं उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को. और ये सारा प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल नीड्स एज वेल, वो 4, 6, 8, 10 हफ्ते में चला जाता है. और वो जो इंटरेस्ट लेवल होता है जो एक एम्प्लॉय की एक एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द एम्प्लॉयर दैट व्हाट दे हैव टू ऑफर, वो बेसिकली थोड़ा सा जो है वो बैकड्रॉप में चली जाती है, जिसकी वजह से वो एक एसोसिएशन, वो एक फीलिंग कभी डेवलप हो ही नहीं पाती, और जिसकी वजह से दैट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय एंगेजमेंट एज वेल. एंड आई प्योरली बिलीव कि जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, वो जब आप फर्स्ट टाइम उसको कॉल करते हैं कैंडिडेट को, और जब आप उसको बुलाते हैं और वो बेचारा 1 घंटा बैठा रहता है ड्यू टू सम रीजन, डेफिनेटली, बट वो पहला इंप्रेशन ही आपका गलत हो जाता है, और उसके बाद वो गैप जो है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से देयर आर नंबर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स जिनको इफ प्रॉपर्ली एड्रेस्ड, तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं. रीजन बीइंग इज जिस
स्लॉट के साथ, जिस जनरेशन के साथ अभी हम डील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जनरेशन सी। और जनरेशन सी दे आर सो फास्ट पेस कि उनकी नजर में शायद हम लोग भी आउटडेटेड हो चुके हुए हैं। देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस, और उसमें जो वो एक इट्स सो फास्ट ड्रिवन इंडस्ट्री जिसमें अब जनरेशन सी फिट इन हो रही है। वो एक्सपेक्टेशन उनकी फ्रॉम द जॉब, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेक्टर, वो इस कदर एक्सपेंड हो चुकी हुई है कि वो जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है रिक्रूटमेंट की, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, कॉम्प एंड बैन की, वो सारी चीजें पीछे जाना शुरू हो गई हैं। जो अच्छी डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर वर्किंग ऑन फ्लेक्सिबल रिवॉर्ड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेरे पास पॉइंट है, मैं उसको एक रिवॉर्ड मुझे अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, बट क्योंकि देयर इज अ फिक्स थिंग जो कि आपको एक स्टैंडर्ड पर्क्स एंड बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और उन स्टैंडर्ड पर्क्स के अलावा कुछ नहीं है, तो वो जो मेरे लिए इंटरेस्ट ही नहीं है उसके लिए, तो उस पे वो मुझे चीज बिल्कुल कभी सही। भी लुक्रेटिव फील नहीं होगी। अगर हम एक ऐसा फ्लेक्सिबल रिवॉर्ड दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ बेसिकली होमवर्क, जिसमें आपके फाइनेंशियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बीइंग द एचआर प्रोफेशनल आपको फाइनेंशियल्स को भी देखना है व्हेनेवर यू आर डेवलपिंग द रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन पैकेज एनी एम्प्लॉय। तो वो उसके लिए वर्किंग करना, उसकी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज को देखना, और उसके बाद वो एम्प्लॉयज को ऑफर करना कि ओके दीज आर दी 5, 6 और 7 और 3 और 4 रिवॉर्ड्स, इसमें से यू कैन पिक द टॉप 3 विच अपील्स यू द मोस्ट। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, क्योंकि उस पे वो फिक्स एलिमेंट जो है वो खत्म होता जा रहा है। देखें जिस तरह भी हमारा आज से साल पहले ये ऑनलाइन सेशन वाला जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं, या इवन वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है, वो पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर था। और आई टोटली एग्री विद कमल के जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो देयर इज अ ह्यूज गैप। और इस टाइप की जो एक्टिविटीज हैं वो बड़ा हेल्पफुल रहती हैं। देयर वाज वन कंपनी इन न्यूजीलैंड, दे एक्चुअली टेस्टेड 4 वर्किंग डेज इन अ वीक, और इंटरेस्टिंगली उन 4 दिनों में उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज इंक्रीज बाय 80%। उसकी क्या रीजन थी? दे हैव एनफ टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ, फॉर देयर ओन फैमिलीज, और जो भी लेयर एक्टिविटी या जो भी आप काम करना चाहते हैं, द एरिया ऑफ योर ओन इंटरेस्ट, आपके पास टाइम होता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और बिल्कुल इंटरेस्टिंगली सही। जो हमारा रिटेंशन का इशू है दैट इज नॉट लिंक्ड विद द पाकिस्तानी इंडस्ट्री ओनली। देयर वाज अ वन सर्वे बाय द मर्सर, और उनके अकॉर्डिंगली देयर वाज मोर देन 50% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम टू रिटेनिंग देयर टॉप टैलेंट। और उसी रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि अगर आप अपना कोई हाईली एंगेज और हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय लूज करते हैं, तो जो उसकी कॉस्ट है, जो कि हिडन कॉस्ट है, जो शायद हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, बट उसकी कॉस्ट जो है वो उसकी एनुअल सैलरी के 200% तक इंक्रीज कर सकती है। इंडक्शन का टाइम, फिर उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस, फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर के साथ जेलिन होने में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स लग सकते हैं। तो ये बेसिकली सही बहुत है। सारी हिडन कॉस्ट हैं जिनको हम अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से रिटेंशन का एलिमेंट जो है वो हमारा ये जो है वो एक एरिया ऑफ अच्छा कंसर्न देखें, हमेशा से। बिल्कुल ठीक है। देखें जैसे आपने बात की कि कॉस्ट ऑफ स्किल्ड पर्सन के वो उसकी कॉस्ट कहाँ जाती है, कि अगर एक एम्प्लॉई ने 2 साल 3 साल काम किया है, उसने अब वो जलन हो गया टीम के साथ, वो प्रोसेस के साथ, कंपनी के साथ, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर अगर उसको कहीं से कोई अच्छी ऑफर आई है या वो किसी भी रीजन को लेके अगर वो स्विच कर रहा है, तो उसको रिटेन करने में जो मैंने देखा है वो ये कि कंपनी के जो अथॉरिटीज हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं कि यार हम इसको कुछ ज्यादा पे क्यों करें, या कुछ रिटेन करने के लिए हम इसको आउट ऑफ द बॉक्स क्यों जाएं। जबकि अगर वो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कंपनी के लिए, जी मैं इसका मेरा ख्याल है आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी, I think we are we are currently, I would, if I would talk about in a broader perspective, we are facing the same issues at the moment. अभी आपने जो बात की ओके। ना कि कैसे हम अपने टॉप टैलेंट को रिटेन करें, गुड क्वेश्चन। Have we ever thought about and worked backwardly in a way कि ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? हमने एक पॉलिसी बना दी, हम we have made a policy that whosoever will resign, we have to make sure that they have to go through the exit interview. Okay जी,
Done, brilliant. We have made a very fascinating form. We have made it as much lengthy as we can, and we have, we have scheduled the people. Okay, ji, hello, ji, assalamu alaikum. Thank you very much. We have received your resignation, and we have scheduled you for having an exit interview. So please, can you please, be available on this time? Okay, ji, well done. The person is there on the table in front of you. What you do? You just print out that paper and give it to him. Yeah, and fill the form. Fill it up, and thank you very much. When you're done, just ping me, and I'll come and collect the exit interview form from you, and that's it. And that is closed in the files for the years and years and years. और जिसकी वजह से the somebody will come, he'll open up the forms, he'll make the data compiled, उसके बाद analysis होगा, फिर कुछ होगा तो होगा, but हो ये रहा है कि वो form वो कभी नहीं होता. And I think the most important thing for the HR to understand and give that human touch which is missing, to give that room for the employee to vent out, to see what happened to him in person, to see what he has been gone through. क्या उसको इतना प्रेशराइज कर दिया उसके मैनेजर ने that he wouldn't able to perform and get so much stressed out that his productivity got started suffering now, and that's why he thought he left with no other option to resign from the job. So it's a very critical role. I mean, being sitting on that position where I am, I have to make sure that whosoever resigns will have to have a one-to-one talk with me. Doesn't matter if it's a hard talk. Doesn't matter if the person is talking something which is not appreciating to me as an employer, but then that interview is not for that purpose. That interview is for that purpose, to understand the reasons, to dig down the reasons from the bottom. That what is the reason for the employee to leave? I mean, he is getting extraordinarily well-structured pay structure. He is getting state-of-the-line benefits. He's getting gym facility. He's getting 3 times meal in a day. But then what happened suddenly that he decided to switch? See, if you bring thousands and thousands of facilities to the employee in-house, that will not work until and unless you give that person time to utilize them as well at the same time. So, at the, sunne mein, when you get the offer, oh, I got a gym facility. Oh, I got the free meals. But if you don't give that employee that 30 minutes to take that meal in a piece, what kind of meal you're offering him? What kind of benefit you're offering him? So, सही, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज उर्दू में कंटिन्यू करें हम इसको, ये इजी होगा सबके लिए. ठीक है. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. आई रियली एग्री विद दिस पॉइंट कि आपके पास चाहे आपके कैफेटेरिया में देयर आर नंबर ऑफ डिशेस, लेकिन जब उनको टेस्ट करने का टाइम नहीं देंगे हम अपने एम्प्लॉय को, जब उसको टेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो सारी बेकार है. पॉइंट इज वेल टेकन. अच्छा उस्मान साहब, एम्प्लॉइज भी गलती कर दिया करते हैं, समटाइम्स जल्दी कर लिया करते हैं जॉब स्विच करने में. वो उनको दिख कुछ और रहा होता है और एक्चुअली में होता कुछ और है. तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं आपको लगता है कि जो एक एम्प्लॉई जॉब स्विच करते हुए कर दिया करता है अनजाने में, जिन पे उनको ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल ठीक. देखिए, जॉब स्विचिंग इज नेवर एन इजी ऑप्शन. उसके बाद जब भी हम बात करते हैं जॉब की, तो जॉब में प्रॉब्लम्स हैं. नो मैटर वेयरएवर यू आर वर्किंग, हर ऑर्गेनाइजेशन में जी है. नॉट ओनली विद द जॉब्स. अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप उनसे पूछें तो दे आल्सो हैव अ नंबर ऑफ इश्यूज जिनकी वजह से वो चीजें फेस कर रहे होते हैं जिनका एम्प्लॉइज को शायद आइडिया भी नहीं होता. तो उस सिनेरियो में ये एक मिथ क्रिएट हुआ है कि वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये एक ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे इश्यूज ज्यादा हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो कम हैं. तो मैं जिस नई ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा मैं, तो वहां पे शायद सारी चीजें ठीक, सब अच्छा है. सब अच्छा है. वो बाहर से तो सब अच्छा लगता है, बट आप जब शुरू में जाते हैं, शुरू में जो आपका वो एक हनीमून पीरियड है कुछ 4 to 6 वीक्स का, उसमें तो आप खुश रहते हैं. बट उसके अलावा जब आपका फिर वहां पे जो वर्किंग स्टार्ट होती है, तो वहां पे देन यू रियलाइज के यार नहीं, वो पिछला एम्प्लॉयर जो मेरा है वो ज्यादा बेहतर था. वहां पे ये चीज भी अच्छी थी, वहां पे ये चीज भी अच्छी थी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. देयर नंबर ऑफ रीजंस जो कि वो फिर अपने एक माइंड में जो है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उस पे काम कर रहा होता है. तो यहाँ पे जो एक पुरानी कंपनी और पुराना बॉस हमेशा अच्छा लगता है.
हमेशा अच्छा लगता है। तो उसमें जो एक इस टाइम पे बड़ी इम्पोर्टेंट और जो एक वैल्यू एडिशन जो चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि हमारा जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जो एक एलिमेंट है जिसपे जो है ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही होती हैं, एम्प्लॉय खुद भी ऑन एंड ऑफ, जो कि खुद वाला एलिमेंट काफी कम है, बट उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दैट इज अ रिजिलियंस, हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर। देखें घर में भी मसला होता है, जब आपको चार दोस्त इकट्ठे बैठे हुए हैं वहां पे भी इश्यूज आते हैं, बट जॉब की दफा में हम कहते हैं अच्छा यार यहाँ पे ये मसला है, जॉब स्विच कर लेते हैं। तो जॉब स्विच करना इज नॉट एन ऑप्शन, यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग इनफ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन से बेसिकली जब आप बाहर आएंगे तो आपका एक लर्निंग जोन आता है, आपको नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, आपको नए लोगों से डील करना पड़ता है, आपको नए सिनेरियोज को हैंडल करना पड़ता है। जब आप इस प्रोसेस को गुजर जाते हैं फिर आपका ग्रोथ जोन आता है। तो वो हम कंफर्ट जोन में बिल्कुल ही सही। रहने की कोशिश करते हैं, उससे हम लर्निंग जोन में नहीं आते। वो एक सिर्फ एक मिथ बना रहा है, यार ये कंपनी नहीं ठीक है, यहाँ पे ये मसले हैं, उसको स्विच कर जाएं तो वो दूसरा जो है वहां पे हमारे पास जो है बिल्कुल वो ठीक। एलिमेंट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे हमें खुद काम करने की जरूरत है, दैट इज बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, वो बहुत हमें बेसिकली देखने की जरूरत है कि जब हम डिसीजंस कोई ले रहे हैं हम कितने एक इमोशनल इंटेलिजेंस या वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन है उसके बारे में, खुद के बारे में जानना, लोगों के बारे में जानना, वो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे डिसीजंस को जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं। और बहुत ज्यादा स्विचिंग जो है, जैसे हम एचआर प्रोफेशन में है, जब भी किसी सीवी पे आपको 6 माह के बाद, 8 माह या साल के बाद आप स्विचिंग देखते हैं तो वो फिर लोग वहां पे रियलाइज करते हैं नहीं ही इज अ जॉब हॉपर। तो वहां पे आप अपनी मार्केट भी खराब कर रहे हैं। आपके जो खराब कर रहे हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3-4 ऐसी गलत मूव्स आपने की, तो जो अगला जो रिक्रूटर बैठा हुआ है वो आपका शायद सीवी शॉर्टलिस्ट ही ना करे। तो जॉब स्विचिंग बिल्कुल जो है ऐसे वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है और उसमें एकदम इमीडिएट इन अ रश डिसीजन मेरा ख्याल है वो नहीं करना चाहिए। और मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई जॉब स्विच कर रहा है, जब उससे हम पूछें कि आप क्या देख के जॉब स्विच कर रहे हैं, ये क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, तो उन्होंने हमेशा प्रॉब्लम सामने रखे होते हैं, मतलब फिंगर टिप्स पे, यार यहाँ पे ये भी था, घर से भी बड़ा दूर है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत हार्डली मतलब हम ऐसा देखते हैं। कमल, आई गेस आपने भी इस तरह के बहुत से केसेस देखे होंगे कि उन्होंने एनालिसिस किया हो बकायदा कि यार मेरी करंट कंपनी में वहां पे स्कोप ऑफ वर्क इतना है, वहां पे मेरी लर्निंग इतनी बाउंड है, जहां मैं जा रहा हूँ वहां पे ये है, मतलब वो उस तरह से कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं होता उसके पीछे। अच्छा शहान, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई एम गोना टेल यू नाउ। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोस्पेक्ट को या किसी कैंडिडेट को का पूल जनरेट करती है और उसमें से बंदे या प्रोस्पेक्ट्स पिक करती है या किसी पोजीशन के लिए इंटरव्यूज करती है, तो वो ये जरूर, अब चूंकि ये ज्यादा हो गया है, वो ये देखती जरूर है कि ये जो बंदा है, आई एम नॉट गोना टेक एनी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस नेम, बट देन ये बंदा जो है इस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली इसके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग होंगे, यू नो। And if this person who is studied in a certain B category university or tier 2 university, ये बंदा, I don't think so he's gonna able to sustain our culture. I don't agree to this point to some extent because it doesn't. I mean, organization takes so much time to take this decision that हम इस बंदे को रखें या हम इस बंदे को रखें। I think ये बंदा इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया तो ये जरूर इसकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। हम ये, अगर मैं बात करूं एज अ कैंडिडेट, मैं ये क्यों नहीं सोचती अपने पर्सपेक्टिव से कि अगर मैं ये कंपनी ज्वाइन करूंगा या करूंगी तो मुझे क्या मुश्किलात आ सकती हैं। अगर ये कंपनी मुझे बेशक तनख्वाह अभी तो बहुत आला दे रही है, बहुत आला बेनिफिट्स दे रही है, यू नो, एवरीथिंग इज सो लैविशिंग एंड सो फैसिनेटिंग, क्या डाउन द रोड रियलिटी भी ये है या नहीं? वी कांट डू रिसर्च, हमें रिसर्च की आदत ही नहीं है। हम कभी जाके, चलो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जो मैंने भी ऑब्जर्व किया और आई थिंक टू सम एक्सटेंट कुछ जगहों पर ये सही लग भी जाता है, गूगल हर चीज का हल है। आप
छोटी से छोटी चीज, आप बड़ी से बड़ी चीज, आप एक कोड डालो, उसकी स्क्रिप्टिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आप ये चेक नहीं कर सकते अगर गूगल पे डाल के रिव्यूज में जाके कि इस कंपनी का रिव्यूज क्या है और लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आपको वहीं से अंदाजा हो जाता है कि इस कंपनी का क्या प्लेटफॉर्म है, इस कंपनी के इसके कंपनी के जो फुटप्रिंट्स हैं, जो रूट्स हैं, वो क्या है, किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप कभी देखना नोट करें, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पाकिस्तान में जैसे ऑपरेट कर रही हैं, देयर सीईओज आर सो मच टेकिंग इंटरेस्ट इन दोज रिव्यूज कि वो हर एक रिव्यू को पढ़ते हैं, उसका एक्सपीरियंस पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं, जो आपकी मार्केट वैल्यू इंप्रूव करता है। वो वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केट के अंदर गलत जा रहा है, दे counterparted, they do justify that as well. So हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ जाते हैं, हम बड़े बड़े हम इतने पैसे लगा के अच्छी यूनिवर्सिटी डिग्री ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सीखते कि हम किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन करें तो उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने पुराने लोग हैं जो भी उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। सो आई थिंक उस्मान साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे ख्याल से कि जो एक प्रोस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है उसकी वर्थ क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसके एम्प्लॉइज कितने हैं, उसकी पॉलिसीज क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ओवरऑल। तो आई थिंक मेरा ख्याल में तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री। अब बेसिकली गूगल तो आपके पास सब कुछ ओपन करके रख देता है, बिल्कुल, नो मैटर इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक आपको मिल जाता है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बेसिकली, जो एक आप उस एम्प्लॉयर का नाम सुनते हैं, उस जो उसका ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है, उसको स्टडी करना बड़ा जरूरी है बिफोर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस तरह आप उसके अलावा कोई और ऑप्शन हो ना हो, अब लिंक्डइन आपके पास ऐसा है कि अगर किसी एम्प्लॉय का बुरा एक्सपीरियंस है एम्प्लॉयर के साथ, तो वो सूनर और लेटर उसको लाजमी मेंशन करेगा। और उसके आप बिल्कुल बाकी बिल्कुल पेजेस हैं, बाकी देयर आर नंबर ऑफ साइट्स जहाँ पे आपको ग्लास डोर की एक ऑप्शन है, वो आपको बड़ा एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव आपको, इफ नॉट 100 पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% है, 100% सही उसमें होता है। बायसनेस एलिमेंट हो सकता बिल्कुल है। हो बिल्कुल हो सकता है सकता मेरा एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा नहीं रहा तो मैं वहां पे कुछ नेगेटिव कमेंट कर दूं, बट 10 आउट ऑफ 10 नहीं हो सकते, दो नहीं लोग हो गलत सकता। हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, बट दैट गिव्स यू अ वेरी फेयर बिट ऑफ आइडिया कि वो एज एन एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके रिव्यूज क्या हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और वो बड़ा आपको एक क्लियर इमेज दे देती है। और आई गेस जिस तरह आपने कहा कि वो रिसर्च जरूर करनी चाहिए, वो हमारी जो अब यंगर जनरेशन है उसमें ये एलिमेंट बहुत ज्यादा मिसिंग है। वो अपनी पसंद की चीज तो यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं से भी ढूंढ लेंगे, नो मैटर वो कोई ऐसे ही है शायद जी, 20 बिल्कुल 30 40 साल पुराना भी कोई पुरानी ही हो, चीज हो, वो उसमें बिल्कुल ऐसे ही निकाल है। लेंगे। बट जब उनकी लर्निंग की बात आती है, जब उसकी इस टाइप की कोई रिसर्च की बात आती है, तो अनफॉर्चुनेटली उनके पास इन चीजों के लिए जो है ना वो टाइम थोड़ा कम होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल अच्छा, ऐसे आई एम ही सॉरी, है। मैंने थोड़ा सा आपका मिस कर दिया। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है और एक नहीं मल्टीपल कमेंट्स हैं मिस मलिक के नाम से, और उन्होंने ये पूछा है कि हम ये एम्प्लॉइज को पुश करने वाला कल्चर, इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, बोथ ऑफ यू एज एन एम्प्लॉयर। Push means I didn't get it. I mean to make them leave, like कि जैसे बात की थी अभी उस्मान ने कि कल्चर का प्रॉब्लम होता है, रोल्स डिफाइन नहीं होते, कंपनसेशन जो कि हमारे हाथ में नहीं है, एचआर प्रोफेशनल के जो टीम है उसके हाथ में अगर नहीं है, ठीक है, सपोज व्हाट अदर इनिशिएटिव्स वी कैन टेक जिससे एम्प्लॉय को हम रिटेन करने में सक्सेसफुल हो सकें। जी उस्मान साहब, आप पहले। नहीं प्लीज आप पहले ओके, आप आई थिंक किसी भी प्रोस्पेक्ट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो उस वक्त से शुरू हो जाता है जब से वो ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है, इन टर्म्स ऑफ एज एन एम्प्लॉई। आप किसी एम्प्लॉई को जो हम कहने को बड़ा कहते हैं कि जी हम वी मेक श्योर दैट वी डू orient the new joiner, and we make sure that we provide everything to them and they make their transition very comfortable. But then are we really practicing that? That's most important. क्या आप 30 डेज 60 डेज 90 डेज का 1-to-1 उन एम्प्लॉइज के साथ, उस बैच के साथ जो उनका ट्रांजिशन फेज है, उनके साथ क्या इंटरेक्ट कर रहे हो एज एन एचआर? क्या आप उनको ये देख रहे हो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उनको और
एक बहुत important चीज जो हमारी organization में I never saw, to be honest with you, wherever I work, it's a wonderful initiative which we as an I2C has taken in that, and that is buddy program. True. And that buddy program would help the new person to get comfortable in that first 2 weeks of his joining, to make sure, starting from the cafeteria, he has to escort to the cafeteria, he has to make sure he has to tell and guide him where is the prayer room, he has to make sure that he has to guide where is the administration set, he has to make sure that where is the machine actually stands to get your foot, your RFID card for the attendance as well. So this buddy program helped us a lot to retain people and to create that experience for them, which they will remember. And whenever they go out, they talk about it. They talk about platforms where the organizations don't have this facility for the new joiners. उनको खुद ढूंढना पड़ता है, उनको खुद एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने चीज को. Similarly, एक बहुत important चीज जो हमने अपनी organization में start की, because I want people to learn from the experiences and the best practices which good organizations are doing at the moment. उसके अंदर एक बहुत important चीज है, we have started a concierge service. Concierge service is just not been responsible for the employee traveling and all these matters, but also अगर आपने अपने घर का कोई bill pay करना है, you don't have to be worried about it. The person is there right on your doorstep in your office to take that money from you, the bill from you, and he's gonna pay it on your behalf. Similarly, फॉर एग्जाम्पल आप न्यू ज्वाइनर हैं, आपने जी अपना सैलरी अकाउंट खुलवाना है अपने किसी बैंक में जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड है, you don't have to go to the bank. Bank will come to the premise. Bank will come. Representatives will come to the premise. They take your documents. They make sure that you are on the go when you get your first salary, and you don't have to be paid in the form of check. So these kind of small efforts, facilities will help in such a busy and hustle-bustle life of ours to remember for the rest of the life. आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ जहाँ ये बड़ी प्रोग्राम है, मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, they're paying me well and I want to move my career, but they don't understand the ease of having that buddy program, which they probably regret when they lose their job and move on to the better opportunity. So it's just not about the compensation, it's about other facilities which organization is taking care of you. And again, the very important factor, now it's 2021, male, female, doesn't matter. Everybody is working, everybody is working and, to make, wheels running. So the daycare facility, the state-of-the-art daycare facility is such a blessing in the organization, Usman Saab, that you must be very much, agree to my point that totally. For you it's very important, for me as a woman it's very important, and for the kid itself is very important, so that you can go and reach to your kid who is just 3 months old and you don't have to live in home isolation environment. You feel energetic, you feel alive when you see your son or daughter just next to you and next to your door, and you can just walk into the daycare, hug them. So all energy which you get is make up your day for the rest of your day. Exactly. So I think very true. These things matter a lot, and people are really thinking about creating those memorable experiences, for the kids. For example, you have a birthday of your son or daughter, the first birthday. You are at the office. It's Monday morning. You can't you can't buy the cake for the child. And what the daycare, the administration do for you, they arrange a cake for your son and daughter within the daycare, and you go there and you celebrate that and create that memorable, capture that memorable experiences. So कहने को ये बहुत, I'm sorry I started again in English, but कहने को ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, but मेरे नजदीक इनका impact बहुत है. किसी भी HR प्रोफेशनल का जो HR के उस कैटलिस्ट से गुजरता है, उस्मान साहब हैं, आप हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं which are working, जो इस HR की फर्टिलिटी में काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीजें अब सिर्फ अपने तक इम्पोर्टेंट नहीं है. आई थिंक ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस को इन चीजों से आगाह करें और उनको बताएं कि दुनिया में ये हो रहा है, हम क्यों इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सकते. ये कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता इस चीज में, कोई इतना फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं होता, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप एम्प्लॉइज के लिए कर सकते हैं. उस्मान साहब, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसा एक्सपीरियंस है जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को रिटेन रखने के लिए या
उनका इसमें हेल्प कर रही है या कर सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी आपने एलिमेंट्स की बात की है कि जिसमें हम एम्प्लॉइज़ को एक एक्स्ट्रा स्टेप जाते हुए फैसिलिटेट करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग। और इसमें जहाँ तक अभी जितना शान ने बात की थी कि हम ठीक है फाइनेंशियल्स में या कॉम्प एंड बेन में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा-सा मैं स्लाइटली मतलब पार्शियली एग्री भी करूँगा, पार्शियली डिसएग्री भी करूँगा। एज़ एन एचआर प्रोफेशनल वी शुड बी कंफर्टेबल विद द नंबर्स। देखें व्हाटएवर जो भी आप कॉम्प एंड बेन अभी आप दे रहे हैं उसकी एक कॉस्ट है, और इफ बिल्कुल। यू नो द कॉस्ट, आप उसी कॉस्ट में यू कैन हैव अ फ्लेक्सिबल प्लान, जैसे मैंने पहले बात की थी। देयर इज नो नीड उसके कोई आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे मत जाएं। ठीक है, मुझे एक ऑप्शन ए या पर्क ए मुझे नहीं चाहिए, तो उसी के ऑल्टरनेट में एक पर्क बी अवेलेबल है, मे बी मेरे लिए वो ज्यादा इंटरेस्ट की चीज हो, उसको रखा जा सकता है। चलें उसको अगर नहीं भी टच करते, और जिस तरह अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांसपेरेंट, मुझे पता है कि मेरे साथ एक फेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कोई फेवरेटिज्म बहुत एक खत्म तो नहीं हो सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो मैटर वेयर जी यू बिल्कुल वर्किंग, ऐसे। वो खत्म नहीं हो सकती। बट एक फेयर ट्रीटमेंट मुझे मेरे साथ चल रहा है, और एक फेयर ट्रीटमेंट के साथ मेरा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको भी देखा जा रहा है, मेरी लर्निंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को भी देखा जा रहा है। तो ये चीजें आपका जो एक इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती हैं, आपकी जो रिटेंशन लेवल है उसको वो बढ़ाएगी। डेफिनेटली रीजन बीइंग इज ये तमाम चीजें जितनी जो भी आपने भी जिक्र की, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर। ये कहीं भी चीजें साइकोलॉजिकल, लिखी बिल्कुल। नहीं होती, ये कहीं भी नहीं लिखी। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी इन राइटिंग। ये एक मेरी एब्सोल्युटली। एक्सपेक्टेशन है, मेरा एक एक ट्रस्ट लेवल है अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के साथ है। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, जो जहां पे जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वहाँ का कल्चर उतना ज्यादा जो है वो फ्लरिश करेगा। कल्चर फ्लरिश करेगा तो आपका बिल्कुल। रिटेंशन और उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉट ओनली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बल्कि एक्सटर्नल मार्केट में भी बहुत सारी वो चीजें जो हैं वो एक्सप्लोर हो आपको, जाती हाँ, हैं। उसकी सोशल मीडिया इफेक्ट की रहेगी। बात करते हैं, जी सोशल मीडिया की हम हम्म, प्रेजेंस की बात करते हैं, वहाँ पे कंपनीज डू सेलिब्रेट लाइक जिस तरह हमने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हमारे पास देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग विद अस फ्रॉम द लास्ट 10 15 20 25 years, और द परसेंटेज इज वेरी हेल्दी विद इन समद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उसको बाकायदा हम इंटरनली भी सेलिब्रेट करते हैं बाय सेंडिंग देम द ईमेल्स, और उसको हम अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर स्केलेट करते हैं, न्यू जॉइनर्स हैं। तो ये बेसिकली बड़ी एक हेल्दी इन्वायरमेंट है जिससे एम्प्लॉय भी वैल्यू फील करता है, आपकी जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दिस विल हेल्प यू इन योर रिक्रूटमेंट एज वेल, और उसका एक विन विन सिचुएशन होती है जो कि एम्प्लॉय के लिए भी है और एम्प्लॉयर के लिए भी है। रिटेंशन जितनी ज्यादा प्रोलॉन्ग होगी आपकी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो एक ग्रोथ है, जो एक अटैचमेंट है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उतनी ज्यादा फ्लरिश होती है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। आज की हमारी ये जो डिस्कशन थी इस पे, ये जो टॉपिक है बेसिकली एम्प्लॉय रिटेंशन, ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें हम जितनी बात करें, बहुत सी उतनी कम चीजें, है। बहुत से आइडियाज, बहुत से इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो स्टिल अभी भी ऐसे हैं कि जो कवर हो सकते हैं, नहीं हुए। हो सकते हमारा हैं। इसी टॉपिक पे बिल्कुल। पहला एक सेशन था, कुछ चीजें उसमें कवर हुई और कुछ और हमने आज इस सेशन में कर ली। एक दो और इस पे हम करेंगे सेशंस ताकि इस पे मजीद क्लैरिटी आए और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो मजीद इसमें थोड़ा सा सीख सकें, जान सकें कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे गैप्स हैं, किन चीज़ों में इंप्रूव करने की जरूरत है। एचआर प्रोफेशनल्स जो हमारे ये सेशन देखेंगे उनको बहुत सी हेल्प मिली होगी और इन फ्यूचर मिलेगी जब भी बाद में वो इसको देखेंगे। टू इंशाल्लाह। समिट आप कमल, आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग कमेंट एंड एनी पीस ऑफ एडवाइस टू द वर्किंग कम्युनिटी? I think we, if I talk about as an employee, this is to some organization was a very tough time. And in terms of not generating the expected revenue, but in terms of maintaining that balance between work and the employee's work-life balance. तो एज एन एम्प्लॉय आई थिंक अगर आप कमिटेड हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यू करे, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहना पड़ेगा।
You have no other choice. And if you do not become committed to the organization, it's vice versa, you know. कुछ organizations के पास उस वक्त choice नहीं होती to get your replacement, but then when they have, they lose interest in you as well at the same time. So I think it's very important for as an employee, if I talk about myself, to be committed to the organization and think positive. Not all the time. It's not humanly possible, understandable. There are certain things which aggravate and you get frustrated. But talk out, communicate with the employees, communicate with the top management. And if you are sitting on that level where you can communicate and reach out to the top management and take the concerns to up, please do that. Please do that. Because if you will not do it, nobody will do it. Nobody will do it. Right. Qazi sir. That's what Usman sir, closing comment and जनाब piece of advice. जी बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट तो जी इसमें यही होंगे कि जो इट्स अ टू वे प्रोसेस, जो आपका एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, जो एक कॉम्पेन बेन का एलिमेंट है, जो एक कल्चर का एलिमेंट है, वो गिव एंड टेक पे चल रहा होता है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर आल्सो हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. उसको फुलफिल करना, उसको जो एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ऊपर जाना. हम बस समझते हैं कि जो बेयर मिनिमम लेवल अचीव कर लिया दैट इज मोर देन एनफ. बट एम्प्लॉयर and they are right in this context. मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन गलत है. मुझे अपना 100% देने की ज़रूरत है. मुझे अपने स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है. हम जब 21st सेंचुरी में है, टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, वो तो रैपिड पेस पे चेंज हो रही है. वैसे बिजनेस प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लीन की इन्वॉल्वमेंट है, काइजन की इन्वॉल्वमेंट है, 6S की इन्वॉल्वमेंट हम आ रहे हैं. तो वो जब तक मैं खुद नहीं सीखूंगा तो उस पे बेसिकली गैप बढ़ता जाएगा. और जब वो गैप बढ़ेगा तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं अपने एम्प्लॉयर के लिए एक यूजलेस एम्प्लॉय बनना शुरू हो जाऊंगा. रीजन बेंगे मैंने अपने आप को अपने स्किल सेट को बेसिकली इम्प्रूव करने जो है वो नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा मेरे लिए ड्रॉबैक होगा. तो ये सिर्फ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो मेरी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे करे, इन्वेस्ट करे. डेफिनेटली एम्प्लॉयर करते हैं, उन्हें करना चाहिए, बट इट्स माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि मैं अपने ऊपर, मैं बाकी हर चीज़ पे स्पेंड कर लेता हूँ, क्या मैं अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे, अपनी प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे स्पेंड नहीं कर सकता? क्या मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड की डिग्री जो मैंने आज से 5, 7, 10 साल पहले ली थी, उसके बाद क्या मैंने कभी कोई सर्टिफिकेशन, कभी कोई 1 डे कोर्स को अटेंड किया हो? उन चीजों को एड्रेस करने की भी बड़ी जरूरत है. हम सब कुछ एम्प्लॉयर पे ब्लेम नहीं कर सकते. एज एन एम्प्लॉय भी हमें बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है. वेल टेकन. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया कमल आपका, उस्मान आपका, आज हमें ज्वाइन करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, कमेंट किए. कुछ कमेंट्स को हम रिस्पॉन्ड कर पाए और कुछ को हम नहीं कर पाए. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में जो हमारे पास पॉइंट्स रह गए हैं या जो मजीद इस पर डिस्कशन हो सकती है उसको लेके आएंगे. एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे एट 8 PM. Do join me in Connect with Shahan. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much. Take care. Thank you very much, everybody, and have a lovely evening. Take care. Bye bye. Thank you so much. You have a nice weekend. Allah Hafiz.